Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Indian English Literature part 14 and today we will talk about V.S. Naipaul. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Prishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English Literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. Good evening Manju, good evening Cherry, good evening Renu and Geetu. Welcome. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Good evening Vedvyasji, welcome. These are the timings of your classes. Monday to Friday at 8:30 p.m. Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Good evening, Rajveer. Welcome. So today we will read V.S. Naipaul. This is the timeline of V.S. Naipaul. You can see 1932 to 2018 is his timeline. He is another very important novelist and short story writer for Indian English literature. Okay, so let's start with his biographical details. V.S. Naipaul, his full name was Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul, and he is mainly known as a Caribbean uh, Indian novelist. Okay, Caribbean Indian novelist. He was born on 17th August 1932 at Trinidad. Recently, we have passed V.S. Naipaul's birthday. Yes, Manju, right. Good evening, Sunny. Welcome. So, born on 17th August 1932 at Trinidad. His father was a journalist. He studied at Queen's Royal College. These are basic details. He later moved to London. He wrote a novella called Flag on the Island. It's a minor work, but remember the title. It is a novella, Flag on the Island. And yes, Manju has said it right. He received Nobel Prize in 2001 and he got a fellowship at Makerere University in Uganda. Okay, and this is very important. ये शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा. He wrote an essay, Conrad's Darkness, praising Joseph Conrad for his portrayal of the Africans in Heart of Darkness. So this essay is about Heart of Darkness and ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि कौन से इंडियन राइटर ने प्रेस सॉरी सॉरी कौन से इंडियन राइटर ने प्रेस किया था जोसेफ कॉनराड को फॉर राइटिंग हार्ट ऑफ डार्कनेस. सो दैट इज दिस पर्टिकुलर मैन V.S. Naipaul. ओके, तो ये था उनके बायोग्राफिकल डिटेल्स. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दोनों डिटेल्स आप याद रखना. He got Nobel Prize in 2001 and he wrote this essay, Conrad's Darkness. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं उनके नॉवेल से. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज द मिस्टिक मेसोर, पब्लिश्ड इन 1957. द मिस्टिक मेसोर, पब्लिश्ड इन 1957. Okay, so Mystic Meshuer, basically it is a comic novel and ये जो word है Meshuer, it means a person who can cure illness, a kind of मसीहा. ठीक है, मसीहा का ही एक मतलब distorted form है Meshuer. तो Meshuer का मतलब है, हाँ, Meshuer का मतलब है कि who can cure illness, a person who can cure illness. So it's a comic novel and the main character is a teacher जिसका नाम है गणेश राम सुमैया. Ganesh Ram Sumayar. He is a teacher in a village named Four Ways. Very interesting name, right? Four Ways is the name of the village. Good evening, Iftikhar. Welcome. He wants to increase his income. Okay, he wants to increase his income. So finally he realizes that he is not born for teacher. ठीक है, teaching job उनको पसंद नहीं था. That is why he returns home
from that village, and he wants to restart his career in a new way. He doesn't want to continue his job as a teacher, but he returns to restart his career in a new way. Good evening, Papri. Good evening, Ektaba. Good evening, Ishan. Welcome. Good evening, Shanglap. Welcome. So he wants to increase his income and he returns home to restart his career. Now what happens that after the death of his father, he meets a man named Ram Logan, who is the owner of many shops. So basically वो एक businessman है जिसके पास कई सारे shops है. So he meets Ram Logan and he wants to get a job in one of Ram Logan's shop. So अचानक क्या होता है कि his daughter Leela marries Ganesh unwillingly. Basically Ganesh का जो relationship है with Leela, it is not exactly marital relationship or love relationship. Basically Ganesh flirts with Leela and it is just out of friendship and just out of fun, but Leela misinterprets it as a kind of marriage marriage decision. So Leela has to marry with Ganesh unwillingly. ठीक है, वो unwillingly marry करता है गणेश को. Now Ganesh willingly marries Leela, but Leela is unwilling to marry Ganesh. Okay, that is the thing. So after that marriage, as Leela's father Ramlogan was a great businessman, so Ganesh got more money from his father-in-law. Sorry, in hoga for from his father-in-law. Okay. नो ईशान, कोई पेड बैच तो मेरी नहीं है. जो चल रहा है वो इसी एक ही चैनल में चल रहा है एंड ऑल क्लासेस आर फ्री. ओके, देयर इज नो पेड बैच. ओके, so yes, so Ganesh gets more money from his father-in-law. Okay, now later he meets another person जिसका नाम है Bihari, and Bihari inspires Ganesh to become a writer. The job of that shop is not for him. He decides to become a writer and he writes a book. इसका टाइटल क्या है? टाइटल याद रखना, 101 questions and answers on Hindu religion. Good evening, Rajkishore. Welcome. 101 questions and uh, answers on Hindu religion. Okay. He dedicates his book to Bihari and Ram Logan becomes furious. Okay. Ram Logan becomes furious. Why Ram Logan becomes furious? Because Ram Logan helps uh, Ganesh to get money एंड वो उन्हीं के बेटी के साथ उनका शादी हुआ है, बट वो बुक डेडिकेट कर रहे हैं बिहारी को. So Ramlogan becomes angry and the book becomes super hit. Ganesh becomes a very good writer ultimately. And at the end of the novel, he becomes the president of Trinidad Hindu Association. And Trinidad Hindu Association as a leader. Okay. So Trinidad Hindu Association, he replaces Narayan as the leader and he becomes a politician. He publishes a memoir, The Years of Guilt. He publishes a memoir, The Years of Guilt. Okay, so that is about this particular novel, The Mystic Measure. So it is basically novel का theme क्या है? It is talking about the journey of a man from a teacher to a political leader. Ultimately वो teaching profession से politics में जा रहे हैं. That is the main thing. And finally he publishes a memoir named The Years of Guilt. Okay, that that is Mystic Measure. Okay, so चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नॉवेल में, दैट इज द सफरेज ऑफ एल्विरा, पब्लिश्ड इन 1958. द सफरेज ऑफ एल्विरा. Okay, so what is this suffrage of Elvira? It's a comic novel set in colonial Trinidad and it is a satire on democracy. Okay, तो बेसिकली वी.एस. नॉयपॉल के जितने भी नॉवेल्स हैं वो कॉलोनियल बैकग्राउंड में ही उसका सेटिंग है and it is talking about the colonial British India. Okay, so it is also a comic novel and it's a satire on democracy.
तो इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, नेम भी बहुत पिक्यूलियर है, सुरुचपत हरबंस, he is the main protagonist. So basically this novel is talking about a very realistic theme, the sufferings of people during election. ठीक है, इलेक्शन के टाइम सबसे ज्यादा सफर करते हैं कॉमन पीपल। ठीक है, ये आप सबने देखा होगा, आज भी जब इलेक्शंस होता है तो कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस एंड जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम के बारे में सोचो, के सारे कॉमन पीपल को झेलना पड़ता है। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्शन एंड ऑल्सो बिफोर इलेक्शन। कोई पॉलिटिकल पार्टीज के मीटिंग हो रहे तो बसेस अवेलेबल नहीं है, राइट, यू कैनॉट गो। और अगर आप गए हो, आपको नहीं पता है कि आज कोई मीटिंग है, तो बीच में आप फंस गए हो, आपको बस नहीं मिल रहा है, आप वापस नहीं आ पा रहे हो घर में। तो ऑल दी सफरिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल आर ड्यूरिंग इलेक्शन एंड बिफोर इलेक्शन। तो यहाँ पर ड्यूरिंग इलेक्शन की बात हो रही है एंड इट इज टॉकिंग अबाउट दैट इलेक्शन when Trinidad and Tobago achieved independence in 1962। तो उसके बाद की जो चीज है उसको इमेजिन करके लिख रहा है पीएस नॉयपॉल। इट इज एक्चुअली पब्लिश्ड बिफोर दैट इंसिडेंट ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंस। ओके, so that is about this novel, The Suffrage of Elvira। ओके, नेक्स्ट वर्क पे हम आते हैं, दैट इज माइगुअल स्ट्रीट। माइगुअल स्ट्रीट पब्लिश्ड इन 1959। तो माइगुअल स्ट्रीट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड इट इज सेट इन वार टाइम ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। वार टाइम ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो इसमें जो एक्चुअल स्ट्रीट की बात हो रही है, माइगुअल स्ट्रीट तो नॉवेल में बताया गया है, बट द रियल स्ट्रीट नेम इज लुइस स्ट्रीट ऑफ वुडब्रुक डिस्ट्रिक्ट, where V.S. Naipaul spent his childhood. So original name was Louis Street, but in fiction he mentioned it as Miguel Street. So basically it is a collection of short stories and the short stories are interlinked with each other. Okay, and that is why a group of characters appear in all stories. The characters are common, they appear in all stories, and it is a collection of interconnected short stories. Interconnected short stories. Okay, so basically it talks about Noipol's childhood memories in the port of Spain. Noipol's childhood memories in the port of Spain. Good evening, Neetu. Welcome. Okay, no problem. You can watch the recording of the previous 15 minutes. So childhood memories in the port of Spain, that is about Miguel Street. तो इसमें बस ये important है कि it is a short story collection. Okay. Now नेक्स्ट वर्क पे आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जिससे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड इट इज अ वेरी फेमस नॉवेल, दैट इज अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, published in 1961, a very important novel of a very important novel of V.S. Naipaul. Okay, so a house for Mr. Viswas. तो मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? मोहन विश्वास। ही इज एन इंडो त्रिनिदादियन मैन। ठीक है, एंड मोहन विश्वास इज born with an extra finger. Okay, now after his birth the astrologer predicts that as he has an extra finger he is an unlucky boy and he will also be unlucky for the family in future. So that was the prediction of the astrologer or the priest, and the priest also says that the boy must be kept away from trees and water. Okay, trees and water are dangerous for him, so he must be kept away from these two things. Mainly he emphasizes on water. वाटर के पास तो उन्हें लेकर ही नहीं जाना है। ठीक है, तो व्हेन मोहन विश्वास ग्रेजुअली ग्रोज अप, एक दिन क्या हो रहे है कि ही टेक्स अवे द नेबर्स काफ, one of his neighbor's calf, and unknowingly he goes to the water bodies. He basically goes to a stream and the calf goes inside the stream, but he doesn't have that much attention to that calf. So finally the calf is killed as he is drowned into the stream. ठीक है, तो देखो मोहन विश्वास indirectly becomes responsible for the death of that calf. Right? Yes, Manju, right. Search for identity, हाँ, autobiographical touch है, definitely. Now his father Roku dies while saving him from water. तो इसी इंसिडेंट के साथ ये कनेक्टेड है। एक्चुअली क्या हुआ था कि व्हेन मोहन वेंट टू दैट स्ट्रीम विद दैट काव, ये न्यूज घर में आ गया था कि मोहन एक पानी के झरने के पास है।
ठीक है. तो his father Raghu became very much anxious about him because it was told by the astrologer that water was dangerous for him. So Raghu went to find out Mohan, and he believed that Mohan was already drowned. तो वो पानी में जाकर मोहन को ढूंढने लगता है, and he also did not know swimming properly. So finally he also died by drowning, and indirectly Mohan was responsible for that. So after the death of his father, everybody was convinced that yes, Mohan is an unlucky child. So the family breaks apart, and hmm, Mohan is expelled from the house. Now, with the help of his school friend, Mohan gets a job of sign writing. ठीक है. मोहन गेट्स अ जॉब ऑफ साइन राइटिंग. हिज फीलिंग्स फॉर अ क्लाइंट्स डॉटर, हाँ यहाँ पर देखो जो चीज हो रहा है, हिज फीलिंग्स फॉर अ क्लाइंट्स डॉटर इज मिस इंटरप्रिटेड एज मैरिज प्रपोजल. ठीक है. माइगवेल स्ट्रीट में क्या हुआ था कि गणेश इज विलिंग टू मैरी लीला, बट लीला इज नॉट विलिंग. तो गणेश ने ये गलत सोचा था कि लीला ऑल्सो हैज फीलिंग्स फॉर गणेश. ठीक है. तो गणेश मैरिज लीला विलिंगली, बट लीला मैरिज गणेश अनविलिंगली. बट यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर उल्टा चीजें हो रहा है कि गणेश, सॉरी नॉट गणेश, मोहन विश्वास इज फ्लर्टिंग विद द क्लाइंट्स डॉटर, बट दैट एडवांसमेंट इज मिस इंटरप्रेटेड एज मैरिज प्रपोजल. ठीक है. तो मोहन गेट्स मैरिड टू श्यामा तुलसी. Shama is the name of that girl. Finally, Mohan gets married to Shama Tulsi. Shama Tulsi is actually the client's daughter. तो तुलसी फैमिली यहाँ पर आते हैं. तुलसी फैमिली. ठीक है. एंड तुलसी फैमिली लिव्स इन अ हाउस विच इज कॉल्ड हनुमान हाउस. ये बहुत बार नेट एग्जाम में आए हैं कि तुलसी फैमिली कौन से घर में रहते हैं. यस राइट, एक दफा हनुमान हाउस. वेरी इंटरेस्टिंग नेम ऑल्सो. Right. So he goes to Hanuman house where her family lives, Shama's family lives. Now then what happens that brother, Shama's brother, Shama's brother-in-law Seth offers him a job of a driver in a sugar factory. ठीक है. Next what happens that Mohan tries to build his own house, but it is destroyed. So it is a desperate attempt of building his own house. As Manju has rightly said, it is search for identity. Absolutely. तो जब जितने बार मोहन अपने हाउस बिल्ड करने की कोशिश करे, उतने बार वो किसी ना किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो रहे. So it is actually Mohan's desperate search for identity and how he finally gets lost in that snare of the whole world. So Mohan tries to build his own house, but it is destroyed. He leaves Hanuman house and goes to the court of Spain. He starts working as a journalist. He has 4 children by Shama. Okay. Next, what happens that his family is very unhappy because he fails to build their own house, and finally Mohan dies out of heart attack. तो अल्टीमेटली मोहन के डेथ के साथ नॉवेल का भी एंड होता है. ठीक है. एंड इसमें एक एक कैरेक्टर जैसे यस गीतू ने जो कहा था कि इट इज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, यस इट इज ऑटोबायोग्राफिकल. एंड एक एक कैरेक्टर एक एक पर्सनल फिगर के ऊपर मॉडल है. तो जैसे द कैरेक्टर ऑफ मोहन इज एक्चुअली मॉडल्ड ऑन नोइपॉल्स फादर. नोइपॉल्स फादर जिसका नाम है सीपर साध नोइपॉल. Okay, Shama is actually modeled on a lady named Drawapati Naipal. ठीक है. Tulsi family is actually modeled on Kapil Dev family, and Anand is the son of Mohan Biswas. So Anand is Naipal himself. Anand is Naipal himself. Okay, so that is about a house for Mr. Biswas. नेक्स्ट वर्क पे हम आते हैं, दैट इज मिडिल पैसेज, पब्लिश्ड इन 1962. मिडिल पैसेज. So middle passage is basically a traveler. Okay, and it is based on 5 societies. 5 जगह के ऊपर ये based है. ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज. 5 societies के ऊपर ये based है. फर्स्ट नॉन फिक्शनल वर्क ऑफ नोइपॉल, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब तक हमने नॉवेल्स डिस्कस किया है, बट इट इज द फर्स्ट नॉन फिक्शनल वर्क, एंड ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है. ऑल्टरनेटिव टाइटल है इम्प्रेशंस ऑफ 5 सोसाइटीज, एंड सब टाइटल है कैरिबियन रिविजिटेड. दोनों चीजें अलग है. वन इज ऑल्टरनेटिव, अनदर इज सब टाइटल. ठीक है. तो ऑल्टरनेटिव टाइटल इज इम्प्रेशंस ऑफ 5 सोसाइटीज एंड सब टाइटल इज कैरिबियन रिविजिटेड.
ओके, सो दैट इज अबाउट मिडिल पैसेज। अच्छा, नेक्स्ट वर्क पे हम आते हैं, द मिमिक मैन पब्लिश्ड इन 1967। द मिमिक मैन, तो मिमिक मैन का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज रैल्फ सिंह, हु इज एन इंडो करीबियन पॉलिटिशियन। ठीक है, तो ही इज exiled in London and tries to write his memoir, and the novel The Mimic Man is actually the memoir written by Ralph Singh। ठीक है, तो मेमोर में वो क्या बता रहे हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड इन अ ब्रिटिश कॉलोनी, हिज मैरिड लाइफ एंड पॉलिटिकल करियर, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, व्हिच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द मेमोर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, तो ये उतना फेमस वर्क नहीं है, बट आप मेन मेन चीज याद रखना कि कौन सा किसके ऊपर बेस्ड है। तो इट इज टॉकिंग अबाउट रैल्फ सिंह लाइफ स्टोरी। ओके, रैल्फ सिंह मेमोर। अच्छा, नेक्स्ट वर्क पे हम आते हैं, इन अ फ्री स्टेट। यस, दिस इज एन important वर्क पब्लिश्ड इन 1971, and you all know that in a free state won Booker Prize, that is why it is important। ठीक है, तो बेसिकली इन अ फ्री स्टेट इट इज नॉट अ प्रॉपर नॉवेल इन दैट सेंस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, कलेक्शन मतलब क्या है कि तीन शॉर्ट स्टोरीज को एक साथ जुड़ करके एक नॉवेल बना दिया, राइट। तो तीन शॉर्ट स्टोरीज क्या क्या है, वन आउट ऑफ मेनी, टेल मी हु टू किल, एंड इन अ फ्री स्टेट। ये तीन शॉर्ट स्टोरीज का एक कंबाइंड फॉर्म है दिस वर्क इन अ फ्री स्टेट। तो प्लॉट अलग अलग है। द फर्स्ट स्टोरी, वन आउट ऑफ मेनी, इट टॉक्स अबाउट संतोष, हु इज अ कुक ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफिसर। Okay, now that officer is transferred to Washington, and naturally, as he is the cook, he also leaves his family to accompany his boss in Washington. ठीक है, next what happens that another lady appears, जिसका नाम है प्रिया। Priya offers him much more money, and Santosh accepts her offer because that boss, that civil service officer, exploits Santosh very much। ठीक है, तो Santosh wants to get away from his job, and at that moment he gets the offer from Priya to get a job in a restaurant। So Santosh accepts the offer because the payment was more than the previous job, and finally he marries a black woman। ठीक है, ये फर्स्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी का टाइटल क्या है, टेल मी हु टू किल। दैट स्टोरी इज अबाउट अ वेस्ट इंडियन नरेटर हु गोज टू अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग। ठीक है, तो एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली उसके साथ एक व्हाइट मैन है जिसका नाम है फ्रैंक। So basically, the novel narrates, the story narrates in flashback how this man is separate, how this man was separated from his brother। Okay, his brother, so reflect the past life, how his brother Dayo gets education and he works in a factory। Okay, so he kills one of the kids in Dayo's school and sends to prison। ठीक है, and finally Frank becomes the prison guard, and जब वो brothers के wedding में आ रहे हैं, actually he is under imprisonment but he is released for a few days to attend his brother's wedding। that is why उनके साथ prison guard भी आ रहे हैं ताकि वो किसी दूसरे जगह में भाग ना जा सके। ठीक है, so that is about the that is about the second short story। Third short story, in a free state, it is set in a newly independent African country। तो critics ने कहा है कि it refers to Uganda, but the name Uganda is not mentioned। Bobby, a government official who is a gay man, he is the main character। He feels contempt for Linda, wife of another official। Why? Because Linda has an affair with an American man। ठीक है, finally Bobby is harshly beaten by the soldiers। ठीक है, so that is about this novel in a free state। okay, अच्छा, नेक्स्ट वर्क पे हम आते हैं, दैट इज गेरिलास पब्लिश्ड इन 1975। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्क ऑफ टुडेज क्लास, गेरिलास। ओके, तो गेरिला का सेटिंग है एन अननेम्ड कैरिबियन आइलैंड। The main character is Jane, who is a London woman who loves Rocky, a white South African। तो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में बात होती है। Rocky helps the poor islanders, and while helping, he meets a very
crude man, a crude revolutionary named Jimmy. And Jimmy has a sexual attraction for James. So how finally इनके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिमी के कारण, यही है इस नॉवेल का प्लॉट। गेरिलास। ओके, तो उनके अदर वर्क्स के लिस्ट में क्या क्या है? अदर वर्क्स के लिस्ट में है बेंट इन द रिवर, पब्लिश्ड इन 1979। एनिग्मा ऑफ अराइवल सबटाइटल है अ नॉवेल इन 5 सेक्शंस, इट इज आल्सो एन ऑटोबायोग्राफी। ओके, another work है half a life, published in 2001, एंड इट इज इम्पोर्टेंट। इसके अंदर 3 सेटिंग्स है, इंडिया, लंदन एंड एन अननेम्ड अफ्रीकन कंट्री। तीनों जगह पर इसका सेटिंग है, तो ये याद रखना। एंड इसका जो सीक्वल है वो है मैजिक सीड्स, पब्लिश्ड इन 2004। हाँ जरूर मंजू, बीएस नॉइपॉल से क्वेश्चंस आते हैं एंड डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं हाउस फॉर मिस्टर विश्वास से, बट बाकी नॉवेल से ये छोटे मोटे इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं कि कैरेक्टर क्या है, सेटिंग कहाँ पर है, ठीक है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि विच नॉवेल ऑफ बीएस नॉइपॉल हैज 3 सेटिंग्स, तो आंसर होगा हाफ अ, ठीक है। यस, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, राइट। So Magic Seeds, it is a sequel to Half a Life. Okay, so these are basically the major novels and major works of B.S. Naipaul. तो उनके कई सारे works हैं, इसको जरूर देख के जाना, it's a very important writer. Okay, so that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. So tomorrow at 8:30 p.m. we will have an MCQ session on paper 1, ठीक है। एंड इसमें हम 4 टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू करेंगे, टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन। टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन के ऊपर कल हम एमसीक्यूज करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी लाइव, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all tomorrow at 8:30 p.m.